Okay, very good evening, everyone who have joined us for this live webinar. We have Dr. Bharat with us, who is a diabetologist with 12 plus years of experience, and he'll be guiding us today about the topic of diabetes and COVID, what and how to take care. So thank you so much, doctor, for taking out the time and agreeing for this session. We have these pep talk sessions for you and your family members as well, so that we can impart the knowledge to maximum amount of people, and it will help them to manage their health better. And if there are any questions or queries at any time of the session, you can post it in the comments box or the Q&A tab, and we'll surely discuss them at the end of the session. Thank you so much, doctor, for the time and for everyone who have joined. Thank you so much. Over to you, doctor. Thank you, Manisha. First of all, thanks to Jaila and all those who have joined in. आप सब लोगों के लिए हमने एक 12 लेक्चर का सीरीज रखा है जिसमें हम डायबिटीज से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे. We will be covering all the aspects of diabetes. We will be trying to cover it. So first in the line is diabetes and COVID-19, which is a very hot topic since past 1 year. और पिछले 1 साल में हम सब दिन रात डायबिटीज और कोविड की बात कर रहे हैं. तो अभी भी कोविड का खतरा गया नहीं है. We are all worried with the third wave, when it will come, how it will be, what needs to be done, how we can prevent ourselves. और बहुत सारे सवाल हैं जो आप सबके मन में भी होंगे. तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो क्वेश्चन बॉक्स में रखिए. हम कोशिश करेंगे, if time permits, we will take all the questions and Manisha ji is here to help us in that. So diabetes and COVID, what and how to take care. ये एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे हम आज बात करेंगे. ज्यादा हम क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉमन सा हो चुका है और सब लोग इसके बारे में जानते हैं. Diabetes, does it increase the risk of COVID? This is the first question which comes into the mind of patients. और सबको ऐसा लगता है कि डायबिटीज और कोविड एक बहुत खतरनाक नेक्सस है जिसके साथ पेशेंट्स को बहुत सारी सीरियसनेस का सामना करना पड़ता है. बट एक अच्छी चीज है कि पीपल विद डायबिटीज डू नॉट हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ कॉन्टेक्टिंग कोविड. कोविड होने का रिस्क उतना ही है जितना एक आम आदमी को होता है. हाँ, बट ये जरूर है कि वंस यू कैच कोविड देन द रिस्क ऑफ सीरियसनेस इंक्रीजेस विद डायबिटीज. यदि आपको डायबिटीज है और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो आपकी कोविड की डिसीज को सीरियस होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. नॉर्मल पेशेंट्स में 90% पेशेंट्स जो हैं वो एसिम्टोमेटिकली, 80 to 90% पेशेंट्स एसिम्टोमेटिकली और मिनिमल सिम्टोमेटिकली ठीक हो जाते हैं. डायबिटीज में वो रेशियो कम होता है. डायबिटीज में 50% पेशेंट 50-60% एसिम्टोमेटिकली ठीक होते हैं. काफी को माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, काफी पेशेंट सीरियस होते हैं और they require a lot of effort from healthcare workers to get out of the complications of COVID. So if infected, you are definitely likely to experience more severe symptoms and complications. And when the patient develop infection, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. मुश्किल इसलिए हो जाता है, असंभव नहीं होता, मुश्किल होता है. मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ब्लड शुगर वैल्यूज इंक्रीज विद द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड. आइडियल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो कोविड का है उसमें जो दवाइयां हैं उनसे ब्लड शुगर बढ़ता है. And we need to control the blood sugar to manage the patient's metabolic health और metabolic parameters. उसको बनाए रखने के लिए ब्लड शुगर का कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है. तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग we should all diabetic patients should control their blood sugar values before catching any infection, or God forbid if we catch any infection, we should keep we should do everything to control our blood sugar values. उसका फायदा ये होता है कि यदि आपकी ब्लड शुगर वैल्यूज कंट्रोल्ड हैं तो आप इन्फेक्शन का सामना उतने अच्छी तरह से कर पाते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा मजबूत होती है. और ज्यादा इम्यूनिटी मजबूत होने का फायदा ये होता है कि आप इन्फेक्शन से जल्दी रिकवर होते हैं, कम कॉम्प्लिकेशन में रिकवर होते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन का रेट कम हो जाता है. सो इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इफ यू हैव अ ब्लड शुगर वैल्यू विच इज नॉर्मल और यू हैव अ गुड कंट्रोल. नाउ don't panic. There is no need to panic even if you don't have your blood sugar value under control. यदि ब्लड शुगर वैल्यू आपकी अभी भी कंट्रोल नहीं है तो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम. आपके पास एक चांस है अभी भी कि आप अपनी ब्लड शुगर वैल्यूज को ठीक कर सकते हैं. टेकिंग सिंपल मेजर्स एवरी डे विल हेल्प टू स्टे हेल्दी. ओवरनाइट ना ब्लड शुगर वैल्यू बिगड़ती है ना ओवरनाइट ठीक होती है लॉन्ग टर्म के लिए. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक सिंपल स्मॉल स्टेप्स towards healthy living, healthy eating, exercise, regular monitoring. और ये सारी चीजें करके with all these you will have a well managed diabetes, so that even if third wave comes or even if you catch COVID, your chances of getting a serious infection would be very less.
So these small measures are required from patients, and it is very, I would say, disheartening to see at this point of time that patients have become very reluctant regarding their sugar control. Once the fear of, because I think we Indians are a fear-driven society. Once we are fearful, we do everything, whatever is possible. Once we get out of that fear, we think we are the king. So हमें अभी भी अपने आप को सेफ नहीं समझना है, हमें वो सारी कोशिश करनी है जिससे हम हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ को बनाए रखें, हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करें और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। अब यदि हमें डायबिटीज है तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इफ वी हैव हाई टेम्परेचर, कोल्ड और सोर थ्रोट एंड कंटिन्यूअस कफ, दीज थ्री आर साइंस where we should be worried, we should isolate ourselves, और हमें अपने आप को आइसोलेट करना है। ये सब बातें हम लोगों को पता है। ब्लड शुगर को कैसे मैनेज करना है? छोटे छोटे स्टेप्स हैं, देयर आर स्मॉल स्टेप्स। इफ यू टेक दैट स्टेप्स रेगुलरली एंड प्रॉपरली, you will definitely control your blood sugar values. And first and foremost in control is monitoring. If we don't monitor, we don't know how much we need to control. So नापना बहुत जरूरी है। यदि हम शुगर को नापेंगे ही नहीं तो हमें नहीं पता होगा कि हमें कितनी शुगर कम करनी है, अपनी शुगर वैल्यूज कितनी बढ़ी हुई हैं और हमें कितना ध्यान रखना है। इसलिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मैं अभी भी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों के पास ग्लूकोमीटर नहीं है, home-based glucometer is the best device during the times of COVID pandemic, because most of the laboratories are non-approachable, or if they are approachable, we don't want to go there. हम ही खुद डर के मारे जाना नहीं चाहते हैं। यदि एक ब्लड शुगर मॉनिटर हमारे पास होगा तो फॉर एनी एडवर्सिटीज इन फ्यूचर इफ इट अराइजेस, वी विल बी एबल टू मैनेज इट ब्यूटीफुली वेल। हम बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे। हम हमारे डॉक्टर से फोन पे भी सलाह ले सकते हैं यदि हमें ब्लड शुगर वैल्यूज पता है। दूसरा, स्टे एक्टिव एट होम। माइंड इट, एक्टिव एट होम। एट होम का मतलब है कि यदि कोई, गॉड फॉरबिड, इफ देयर इज एनी न्यू वेव विच इज कमिंग, इफ वी गेट अ न्यू वेरिएंट और कोई फर्दर लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होते हैं, तो इन केस ऑफ दैट लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस, द होम इज अवर प्लेग्राउंड एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। तो घर में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करें। यदि आप बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही घूमें। कोशिश करें अपने घर के काम अपने हाथों से करें। चहलकदमी करते रहें घर में। योगा, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप घर में कर सकते हैं। सिंपल वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दोज एक्सरसाइजेज आप अपने घर में कर सकते हैं। वो कुछ भी आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और आपकी बॉडी उसको परमिट करती है। बट डोंट बी लेजी। अपनी एक्सरसाइज का रूटीन चेंज जरूर करें पर उसको बंद नहीं करें। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करते रहें, बिकॉज स्टेइंग एक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक्स। यदि हम एक्टिव नहीं रहते हैं तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और ब्लड शुगर वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वी नीड टू स्टे एक्टिव एट होम। वी शुड बी एक्टिव एंड वी शुड बी मोर एक्टिव व्हेन वी आर एट होम रादर देन व्हेन वी आर गोइंग आउटसाइड फॉर अ स्ट्रॉल और समथिंग लाइक दैट। Third important point which I want to highlight is take proper medication. We have seen a lot of patients who have skipped their medication due to various reasons. Those who are not taking it properly, those who are not taking it as advised by their doctor. So अपने डॉक्टर ना बने। डॉक्टर ने जैसी सलाह दी है वैसी दवाई लें। यदि आपको लगता है कि आपका ब्लड शुगर का वैल्यू ऊपर या नीचे जा रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ चेंज करें, क्योंकि यदि आपने ज्यादा दवा ले ली, हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए, तो वो भी आपके लिए एक समस्या है। और यदि शुगर का वैल्यू बढ़ा रहा तो वो आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा। So in any case, either a hypo or hyper will land you up into trouble. A hypo will take you to hospital or may require urgent intervention, or a hyperglycemia will actually decrease your immunity. So third point is very important. Fourth, do not take stress. ये I know बोलना बहुत सरल है, बहुत मुश्किल है। जब कोविड का डेटा हम देखते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, सबको लगता है। पर डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं तो फिर हमें डरना नहीं है। हमें अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, या इफ वी वांट टू प्रिजर्व अवर इम्यूनिटी, वी नीड टू बी स्ट्रेस फ्री। जितना हम कोशिश करें, वी शुड अवॉइड द एक्सटर्नल नेगेटिव न्यूज। बाहर की जो नेगेटिव न्यूज है उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली, वी शुड डू रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस लाइक प्राणायाम, शवासना एंड ऑल दोज थिंग्स। और अभी हमने एक रीसेंट स्टडी की थी जिसमें हमने ये देखा कि कोविड के दौरान डायबिटिक पेशेंट में स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई होता है। वो खुद से ही डरे हुए होते हैं। और ये हमें समझ भी आता है। हम दिन रात डायबिटिक पेशेंट से मिलते हैं, बात करते हैं,
एंड वी नो देयर plight, वी नो दे आर वरीड विद ऑल द थिंग्स गोइंग अराउंड. उनको लगता है डायबिटीज है तो कोविड का खतरा ज्यादा है, कोविड से ज्यादा परेशान हो जाएंगे, हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीजें हैं. बट डोंट वरी, इट इज नॉट लाइक दैट कि यदि आप डायबिटिक हैं और आपको कोविड हो गया है तो आपको कुछ बहुत बुरा हो जाएगा. ज्यादातर पेशेंट जिनकी शुगर नॉर्मल है, जो फिजिकली एक्टिव हैं, जिनको समय पे हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है, जो जो बराबर दवाई लेते हैं, जिनको प्रॉपर केयर मिलती है, दे कम आउट ऑफ द डिजीज. इट्स नॉट लाइक दैट कि कोविड किल्स एवरीवन. फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक केयर ऑफ योर फुट. हमने ये भी पाया, हमने देखा कि जिन पेशेंट्स के पैरों में सेंसेशन, जैसे डायबिटिक्स के पैरों में सेंसेशन कम होते हैं, दोज पेशेंट्स हु हैव न्यूरोपैथी, they actually tend to forget their foot care, which is routinely recommended by doctor. There are two reasons for it. One, they are not going to the doctor, so doctor is reminding them every time about the foot care and all those things. You get your neuropathy done, आपके पैरों की जांच होती है, डॉक्टर देखता है, बताता है, तो आपको याद रहता है. तो पैरों की जांच अपनी तरफ से करना ना भूलें. पैरों में यदि कोई घाव हो, कोई खुर बन गया हो, if there is any callousity or any wound, if you see anything which is abnormal in foot, kindly take a snapshot, send it to your doctor and consult him. This is a simple way where you can reduce any long-standing comorbid foot condition. And sixth, and the ultimate important thing is have a balanced nutrition. We have found many patients were doing binge eating at the time of COVID lockdowns. They were preparing delicious food at home. They were partying every day. So this is not going to help you. ये डेफिनेटली अच्छा नहीं है और ये हमें नहीं करना है. हमें वही खाना है जो हमें हमारे डॉक्टर ने बताया है. What has been advised is good for us. And thirdly, we need to be considerate with our food, what we are eating. We should always think that we are adding healthy choices to our food. हमें अच्छा खाना खाना है, जितना जरूरी है उतना खाना खाना है, और जो चीजें अवॉइड करने की हैं वो हमें अवॉइड करनी है. बिकॉज कोविड इज अ हेल्थ इमरजेंसी, डायबिटीज एड्स टू द रिस्क, और हम डायबिटिक हैं तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा. और सबसे जरूरी चीज, seek consultation when it is required. Don't delay it. If you think you have any symptoms, if you think your sugar is raised, if you think something is not right, try to consult your doctor. Try to reach him by whatever means it is possible. If he is not reachable, try to reach his assistant. If his assistant is not reachable, try to reach the hospital where he is attached. Try to call the helpline, but seek consultation when it is required. कई बार हमने देखा है कि मरीज डॉक्टर की सलाह नहीं लेता डर के मारे. लॉकडाउन है, हमें बाहर नहीं जाना है, डॉक्टर बुला लेंगे. ऐसा नहीं है. हम सब लोग आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं. हम सब लोग आपकी पिछले 1-1.25 साल से सारे डॉक्टर फ्रेंड्स दिन रात लगे हुए हैं, और डॉक्टरों का यही कहना है कि पेशेंट यदि फोन भी करता है तो दे आर रेडी टू रिस्पॉन्ड. सो कोशिश करें, आपको जरूर मेडिकल हेल्प अवेलेबल होगी, और इसको डिले ना करें. Complications, we all know there are various complications of diabetes. I will not want to go into detail, but एक चीज, यदि आपको डायबिटीज के साथ डायबिटीज रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, if you have a heart disease associated with diabetes, a diabetic retinopathy, kidney disease or diabetic foot, so you need to be extra cautious, because you need to control or prevent yourself from COVID, and secondly you need to prevent the complication to progress further. तो हमें इसलिए भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है जिससे हमारी ये कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा आगे ना बढ़े. इसलिए जिन लोगों को भी कॉम्प्लिकेशन है उनको अपनी शुगर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. बाकी बहुत सरल चीजें हैं, बहुत सरल टिप्स हैं. घर पे आप कोविड के दौरान डायबिटीज को मेंटेन कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, टेक होम मैसेजेस बहुत सिंपल हैं. वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज न छोड़ें, घर पे भी एक्टिव रहें. योगा आप कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, सिंपल स्मॉल जॉग घर पे कर सकते हैं. डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वी नीड टू मेंटेन आवर डाइट विद होल ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वी शुड ईट इन स्मॉल पोर्शंस एंड एट रेगुलर इंटरवल्स, एंड वी शुड नॉट मिस अवर इंसुलिन और अदर मेडिकेशंस व्हाटएवर आर देयर. जो दवाइयां हम लेते हैं उनको मिस नहीं करना है. यदि हम ये सब करेंगे तो कोविड एक नॉर्मल बीमारी रहेगा हमारे लिए. इस सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज है, ये तो हमें करना ही है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं भूलना है, वैक्सीनेशन को नहीं भूलना है. वी शुड गेट अवर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल. जब हमारा नंबर आ जाता है हमें वैक्सीनेट होना है, मास्क लगा के रखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स अभी जब तक एटलीस्ट आपको आगे एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है. थर्ड वेव हम रोज बातें सुनते हैं,
तो मास्क लगाना ना भूलें। मैं देखता हूँ कई पेशेंट्स को जो ये कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब अब तो कोविड चला गया, पिछली बार भी हमने ऐसे ही सोचा था, पिछली अगस्त सितंबर में वी वर थिंकिंग दैट कोविड इज गॉन बट कोविड केम बैक। सो डोंट ट्राई टू प्ले विद कोविड, वी नीड टू बी सेफ एंड फॉर सेफ्टी थिंग्स आर वेरी सिंपल, मास्क, social distancing, maintaining diabetes, these three are the key. Thank you. Thank you so much, doctor, for explaining the slides. किसी के कोई questions हैं तो अब आप भेज सकते हैं and we will try to answer the questions. Doctor, we have one question from audience. अगर किसी को कोविड से पहले डायबिटीज नहीं था और कोविड के बाद उनके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो उसके लिए क्या उन्हें लाइफ टाइम दवाइयाँ लेनी पड़ेंगे टू मैनेज डायबिटीज? मनीषा जी, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम हमारे सारे पेशेंट से सुनते आते हैं और देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है आपको दवा हमेशा लेनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत एक्यूटली प्रेजेंट होती हैं, जैसे आपको यदि हॉस्पिटलाइज हुए हैं, स्टेरॉइड दिए गए हैं, रेमडेसिविर दिया गया है, स्ट्रेस है कोविड का, आप कई लोगों की नींद कम हो गई थी, स्ट्रेस में थे, उन सब कारणों से भी ब्लड शुगर पेशेंट्स की बढ़ी है। कोविड के बाद हमने देखा है कि अमूमन हर पेशेंट की ब्लड शुगर बढ़ी है और फ्लक्चुएट हुई है, बट इट कम्स डाउन विद टाइम। For many patient, it comes down with regular diet and exercise, with physical activity, with things. तो ये कम हो जाता है, but the thing is, जितना जल्दी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस अपनाएंगे, you correct your lifestyles, diet and everything, the better for you. Another question is, क्या एक डायबिटिक पेशेंट ज्यादा प्रोन होता है फॉर द कोविड इन्फेक्शन? As far as infection catchability is concerned, there is no valid data to suggest कि diabetic patient में fast होता है infection या जल्दी catch करता है, but हाँ, rate of progression is fast in diabetics. Once catches, the chances to become serious is more in diabetics. Okay, okay. Another question that we have is, अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसके बाद उनके ऑर्गन डैमेज के चांसेस कितने होते हैं? लाइक जो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ सकते हैं वो किस लेवल तक और किस पर्टिकुलर ऑर्गन में ज्यादा देखा गया? देखिए, कोविड विद डायबिटीज या इन अ नॉर्मल पेशेंट एज वेल? In the normal patient, COVID mainly blood vessels, vascular component और lungs को impact करता है। तो हमने सारे ही कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट कोविड में देखे हैं। मेनली लंग इम्पैक्ट होता है, लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है, तो जो फेफड़े की फैलने और सिकुड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। उसके कारण बहुत लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हम देख रहे हैं। अभी भी पेशेंट्स देख रहे हैं जिनका लंग वॉल्यूम अभी भी रिस्टोर नहीं हो पाया है, कई पेशेंट्स का। उसको समय लगेगा या वो उतना ना हो पाएगा, वो अभी इट्स अगेन अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग थिंग। तो वो है, बट कोविड का ऑलमोस्ट इम्पैक्ट सारे ऑर्गन्स पे ही हमने देखा है एंड ग्रेजुअली वी आर डीलिंग विद इट। ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेशन ठीक नहीं हो रहे, सारे कॉम्प्लिकेशन if done under proper medical supervision and if you take a proper advice and treatment, are controllable and treatable. Another question is about mucormycosis, which is very prevalent in news and everywhere. So is it that diabetic patients can get it early, or a non-diabetic patient can also get this? Actually any patient who is immunocompromised, जिसकी immunity कम है, उसको mucormycosis के chances ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक्स हम जानते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए म्यूकरमाइकोसिस का 70% एसोसिएशन डायबिटिक्स के साथ देखा गया है। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डायबिटिक्स में होता है, ये बाकी इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स में भी हो सकता है। बट हाँ, यदि आपको डायबिटीज है, आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है और आपको कोविड हुआ है, तो आपका रिस्क जो है डेफिनेटली वो म्यूकरमाइकोसिस होने का बढ़ता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हो ही जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, एक छोटी सी चीज है जिसको कंट्रोल करना है, वो है ब्लड शुगर वैल्यूज। दूसरी चीज है जो आपको बहुत छोटी सी करना है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। यदि ये दो काम हम करते रहते हैं तो ना हमें कोविड होगा, ना हमारी शुगर अनकंट्रोल्ड होगी और ना हम म्यूकरमाइकोसिस पे जाएंगे। डॉक्टर्स, ऐसे कोई सिम्टम्स या साइंस हैं जिनसे वी कैन अर्ली डिटेक्ट दिस फंगल इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस एंड वी कैन स्टार्ट ट्रीटिंग इट अर्ली? तो पहले तो ये कोशिश करें कि ये हो ही ना, क्योंकि ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट म्यूकरमाइकोसिस एंड इट रिक्वायर्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि ये कई बार नेजल साइनसेस को इन्वॉल्व करते हुए, आंखों को इन्वॉल्व करते हुए ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है। तो अर्लीस्ट साइन सिम्टम यही है कि यदि कोई आपको
चेंज इन कलर ऑफ स्किन दिख रहा है, दांतों में कोई दर्द हो रहा है, यदि आपको नाक से कोई डिस्चार्ज दिख रहा है जिसमें कोई कलर आ रहा है, या आपको आंखों में दिखने में कोई तकलीफ हो रही है पोस्ट कोविड, तो आपको डेफिनेटली अपने आप को टेस्ट कराना चाहिए। और यदि आप ये कराते हैं तो आप बहुत अर्ली स्टेज पे इसको चेक कर पाएंगे, डॉक्टर दवा दे पाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। A patient wants to know, how they can reach out to you. आपका एड्रेस या आपका कोई सर आप मुझे दिखा सकते हैं, मैं इंदौर में प्रयास डायबिटीज सेंटर, मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, आई एम ए डायरेक्टर ऑल्सो ऑफ दैट, और इंदौर में आप मुझे दिखा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझे इजीली गूगल कर सकते हैं, आई एम वेरी वेरी इजीली अवेलेबल ऑनलाइन ऑन गूगल। थैंक यू डॉक्टर। आपकी वर्क टाइमिंग्स इफ यू कैन। ऑल द थिंग्स आर देयर ऑन गूगल, if you need that you can just search on Google. Thank you, doctor. Another question that we get generally is about the use of mask. So पहले everybody was saying that N95 use करना है. Now it has modified to double masking. So which is a better option, a cloth mask or a surgical mask or any other option? Look, CDC गाइडलाइंस के हिसाब से हम बात करेंगे क्योंकि हर आदमी की गाइडलाइन अलग अलग है। CDC नाउ रिकमेंड्स डबल मास्किंग। CDC इज अ सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जो यूएसए में है, और वो दिन रात इसी बात पे रिसर्च करते हैं कि हमें बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो CDC गाइडलाइन सेज यू नीड टू यूज डबल मास्क। डबल मास्क यूज करने के पीछे रीजन भी मैं आपको बता दूं कि जब हम मास्क यूज करते हैं, सपोज ये मेरा मास्क है, जब हम मास्क यूज करते हैं और एक सिंगल मास्क लगाते हैं तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है। इन दो गैप से हवा का लीकेज होता है, हवा अंदर भी आती है बाहर भी जाती है। जब हम डबल मास्किंग करते हैं तो एक सर्जिकल मास्क की लेयर और उसके ऊपर एक क्लॉथ मास्क की लेयर होती है। तो ये जो गैप क्रिएट होता है क्लॉथ मास्क का, उसको सर्जिकल मास्क का सॉरी, उसको क्लॉथ मास्क जो है उसको दबा देता है। तो द गैप इज फिल्ड इन सो दैट द एयर डजंट लीक आउट। N95 is only for healthcare professionals. I don't think normal patients or normal public should not use N95. Surgical masks do wonderfully well if they are used in double manner along with a cloth mask or a proper type mask. So that is more than enough. N95 puts a lot of burden on your respiration. वो हर आदमी के लिए टॉलरेट करना पॉसिबल नहीं है। कई पेशेंट हमारे कार्डियक होते हैं, कई पेशेंट को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी एलिमेंट होता है, और जब आप तेजी से दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कई बार लोगों को हमने देखा है N95 लगा के दौड़ लगाते हुए, वो गलत है क्योंकि उसमें आपका एक्चुअली रेस्पिरेशन का जो रेट है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक बार में उतनी सांस नहीं ले पाते। तो यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा बर्डन ऑन योर लंग्स बाय टेकिंग N95 व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो फॉर कॉमन पीपल a surgical mask with a double masking of a cloth mask is good. It can work wonderfully well. Doctor, the same double masking can be used when doing exercises as well, because this is a myth between people कि exercise के time mask नहीं पहनना चाहिए, या which type of mask they should wear. Look, Manisha ji, there are various factors behind these theories, and this is a very valid point and good question you have raised. ये एक बहुत common misconception है। Anything which is hampering your normal respiration is not good. एक्सरसाइज में बॉडी की डिमांड बढ़ती है, रेस्पिरेटरी डिमांड बॉडी की बढ़ जाती है। तो पहली चीज बनती कोशिश, एक्सरसाइज यदि करना है अभी आपको इस समय में, तो बहुत खुली जगह में करें या अपने घर में करें। कोई भी एयर हंग्री एक्सरसाइज जिसमें आपको बहुत ज्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ती है, बहुत तेज सांस लेने की जरूरत पड़ती है, वो पब्लिक प्लेस में ना करें, क्योंकि जितना तेजी से आप सांस लेंगे उतनी तेजी से आप छोड़ेंगे भी। और हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा आदमी एक्सरसाइज कर रहा हो जिसको कोविड हो, आपको ना हो, तो वो तेजी से वायरस छोड़ेगा और आप तेजी से वायरस इनहेल करेंगे। सो डेफिनेटली विदाउट मास्क एक्सरसाइज इन पब्लिक प्लेस इज नॉट एडवाइजेबल, फर्स्ट। Second, if you are at home, if you are alone in your room, you are doing exercises on your roof where no one else is available along with you, you can very well put off mask. उसकी कोई जरूरत नहीं है जब आपके आसपास कोई नहीं है। तो तीसरा, जो आपने कहा कि डबल मास्किंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, a double mask is required to prevent air leak. A single mask will again do air leak, and it will do more air leak because you are doing respiration at a faster rate. So double masking is advisable if you want to do a exercise in a group, and that is why I advise all of my patients to avoid air hungry exercises in group.
in group, especially when you are in closed rooms and proximities. And thankfully government ने अभी permission दी भी नहीं है, कुछ लोग कर रहे हैं तो वो गलत है. And that is the only reason why government has not given permission to open closed exercises in groups. They should do in separate rooms ideally, or with very few people around with mask on. As we are discussing about exercises, तो अगर किसी को कोविड हुआ है, so what type of exercises should they choose to increase their lung capacity, क्योंकि they feel breathlessness but then they have a fear कि sugar levels बढ़ जाएंगे या weight बढ़ जाएगा, so they choose high intensity exercises and then they feel breathlessness more. So COVID एक टॉक्सिक कंडीशन है. COVID is a toxic condition on body. एक CRP जिससे आप सब लोग परिचित हैं, CRP को बढ़ाता है, डी डायमर को डिरेंज करता है. ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को बताते हैं, मतलब हमारा शरीर कहीं ना कहीं परेशान है, बीमारी से लड़ रहा है. कोविड के जस्ट बाद यदि हम बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो हम हमारे शरीर पे और एक्स्ट्रा लोड डालते हैं. इसलिए इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस पोस्ट कोविड. पोस्ट कोविड कोविड जितना ही खराब होता है ना. कोविड के बाद रिकवरी पीरियड जो है उसको बहुत एक इजी मोड में ग्रेजुअली पेस अप करके एक्सरसाइज स्ट्रेंथ गेन करना होता है. एक्चुअली आप बहुत बीमार हो जाते हैं, यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो आप काफ़ी दिन तक बेड पे होते हैं, आपका मसल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उसको रीगेन करने में टाइम लगता है. So the ideal technique is to go slow. First and foremost is lung capacity regainment, as you have told me. So lung capacity regainment के लिए there are simple tips. Either do a respiratory exercise, deep breathing exercises. They are very simple to do. Start with deep breathing exercises. Go to your capacity where you can do it. Do it multiple times in a day. It is very easy to do even on bed. You can do it even in the hospital itself if it is permitted by your doctor. Pranayams you can do very well. That again increases your respiratory capacity. That is nothing but breathing exercises, modified breathing exercises. इन चीजों से lung capacity बहुत अच्छे से improve होती है. For lung capacity, there is no sense in going for vigorous physical exercises. Lung capacity increase can be done with breathing exercises. For physical activity and regainment of physical well-being, go very gradually. Start with walking, then do brisk walking, jogging, and then start your routine exercises. And this all should take at least a period of 4 to 8 weeks before regaining the full strength of exercises. कहीं भी किसी भी समय, if you feel bad, if you feel like any symptom, if you feel any chest pain, breathlessness, perspiration, go and consult your doctor immediately. Because post COVID में कई बार blood clotting के complications होते हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना है. यदि हम ब्लड थिनर पे हैं तो भी इन सिम्टम्स का हमें ध्यान रखना है. So also during COVID lab test और जो लोग CT scans करा रहे हैं, it became very common. So everybody used to feel like मैं CT scan करा लेता हूँ and I'll get to know मुझे COVID हुआ है या नहीं. So is it actually required for the diagnosis, या फिर they are harming their body, because it has been a debate for a long time now. No, actually what happens, Manisha ji, we actually don't follow the medical advice properly. This is a problem with I will call us. We have a problem. Now the thing is, CT scan is not a definitive diagnosis for COVID. यदि आपको symptoms हैं और आप isolate हो जाते हैं सबसे पहले और अपना SpO2 regularly measure करते रहते हैं, if your SpO2 falls below a certain level, then go for a CT scan. Or if your fever is persisting beyond a certain limit which is advised by your doctor, then you should consult your doctor, and if he advises for a CT scan, go for a CT scan. There is no sense in going for a CT scan because CT scan involves a huge amount of radiation, जिसके साइड इफेक्ट आपको आज नहीं दिख रहे, शायद 10 साल बाद दिख सकते हैं. सो बेटर है कि आप फैंसी CT scan, I call it fancy CT scan कराने ना जाए, because you just want to show to your friends and followers that I have done a CT scan. There is no sense in going for a CT scan. If you are feeling healthy, you are fit, and your doctor doesn't need it. If your doctor is saying, irrespective of if you are feeling bad and your doctor senses something and he is saying, no, get a CT scan done, then definitely go, because he is a better judge. He is actually the person who is treating you. So always follow the advice of your doctor as far as CT scan and test. Regarding even blood test, follow the advice of doctor. I have seen patients getting CRP done every day. There is no sense in getting it done. So always follow your doctor. Be with your doctor, follow what he says, and you will be fine. Also, doctor, regarding the medicines, post-COVID, we have seen काफी लोगों को doctors prescribe the blood thinners.
because of the clotting thing. So how much prevalent is it, or वो जो medicine है is had to be taken for a longer time, or gradually it can be stopped under doctor's guidance? It is usually stopped under doctor's guidance, provided your inflammatory markers settle down, your D dimers and other levels settle down, और वो gradually doctor आप की medicine खुद ही बंद कर देते हैं. They themselves do it. और डोंट बी अ जज योरसेल्फ, आप खुद जज ना बने. ये सब वो दवाइयां हैं जो बहुत इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ स्किल टू बी टेकन केयर ऑफ. So with that kind of medicine, you always follow expert's advice. If you have an expert, follow his advice, and then only go with it. But definitely, we have seen in most of patients, the blood thinner have gone down or they have been stopped. Also, doctor, regarding we have seen काफी लोग ये काढ़ा और the natural remedies that we have seen कि लोग over लेते हैं उस चीज का. So is it actually scientifically important कि उससे immunity बढ़ रही है आपकी, या फिर we have seen अल्सर्स हो जाते हैं लोगों को, स्टमक इश्यूज मनीषा बहुत जी, ज्यादा क्या है हो. कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कई चीजें हैं जो हमारे किचन में है, डेफिनेटली है. हर चीज से इम्यूनिटी बढ़ती है, बट इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम उससे रातों रात इम्यूनिटी बढ़ा लें. दैट इज नॉट पॉसिबल. So my advice to everyone is go slow. Again, take it in a moderate amount till you can tolerate it. There is no sense in drinking kada like water. Water is water, kada is kada. Taking one kada is okay if your body permits it. If your body is not permitting kada for a day even or a once even, don't go for it, because there is no way kada is the only remedy which will help you. There are various other things which will help you. First, try to follow the mask and social distancing. And if you want to increase immunity, there are other measures also and other ways also apart from kada. So don't drink kada like water. Also, as we are talking about COVID, so vaccination is something that we should not miss. So, regarding vaccination, can pregnant and lactating females can take it? Recently, the guidelines have come, I think 2 days ago only, that pregnant females can take it. And even lactating females can go ahead with the vaccine. Especially they have given emphasis on Covaxin. If you have any complication, then go ahead with Covaxin. And again, in that case, there is a gynecologist which you are consulting. Go with your gynecologist, what she is saying. There is always a doctor to consult for every remedy. Don't go by WhatsApp, don't go by Facebook, don't go by the blind sayings of anyone which is not endorsed by anyone. So go with your doctor. You can ask your doctor, doctor, can I go for my vaccination? And your doctor is the best judge. She knows if your blood pressure is high, you are in pre-eclampsia, what problem you are having, because pregnancy again entails many problems. So ask your doctor before going for vaccination. Also, doctor, regarding vaccination, if patients' blood sugar levels are high, so should they wait for them to settle down, or can they go for the vaccination? Is it safe for them? Ideally, if the blood sugar levels is very high, we advise them to get it down to a fair bit of level, say around 200, and then go for vaccination. Because you all know vaccination again puts body on a stress, especially Covishield puts the body on stress. So we have seen many patients where they have felt bad after vaccination in high blood sugar values. But yes, it varies from person to person. The impact of vaccination varies from person to person. But for all the diabetics, it is advisable, get the blood sugar values to a sustainable normal value, because to attain a normal value is little difficult. If you are having a blood sugar value of 400 and you suddenly want to bring it down to 100, it's little tricky. It is not possible in a day. So consult your doctor, go with what your doctors say, because if you are diabetic, you may be having other comorbidities also, and he will be a better judge according to that comorbidities to advise you whether to go for vaccination right now or not. Regarding the vaccination, doctor, we have seen patients getting their antibody test done, and based on the ranges, they say कि अभी तो अच्छा range है, तो अभी तो I can wait for the vaccination. So is it anyway relevant or not? No. COVID is having a lot of variants, and I am telling you, ये जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वही लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार. तो I should not say it, but this is actually the case with COVID. The simple thing is maintain your immunity, control your parameters, blood pressure, blood sugar, take it into range, mask, social distancing. No antibody will help you if you catch a variant against which the antibody is not working. There are various variants, and we come to know after we have been caught that this is the variant. So better है कि एकदम we should not be ignorant.
और एकदम बहुत ज्यादा साहस में ना आए कि अब एंटीबॉडी है तो हमें कुछ नहीं होने वाला. We have seen patients, even those who had antibodies, and they have been caught with some different variant. So don't play with COVID. Also, doctor, if a person has taken Covaxin, for example, as a first dose, can they change the second dose to any other vaccination, or is that it has to be It same? is not recommended yet in India, although a lot of politicians in Western world have done it. Let the results come with them, and then we can plan. But government does not advise cross vaccination or substituting one dose with another. So it is not till date permitted by Government of India and Ministry of Health. Also, post COVID, if somebody has had the infection earlier, so how much time should they wait for getting the vaccination done? The recent recommendation is 2 months after COVID. They should wait for 2 months for vaccination. Okay. Thank you, doctor. If there are more questions, you can share in the box, and we'll surely try to answer them all. Meanwhile, doctor, people, also ask if they have diabetes. So, till what range can it be managed by the oral drugs, and after what time, insulin is required? It all depends. It all depends actually. A person who is having a blood sugar value of 250 even, if he's or his body is not producing insulin, then he will require insulin. So insulin is not a taboo. You may require insulin at very low blood sugar values also, especially in pregnancy, especially in conditions where we want to avoid oral medications. You have coexisting conditions where we can't give oral medications. So we need to put you on insulin. So there is no guideline according to blood sugar value where we can decide that it is going to be well with oral drugs or insulin. It is only the condition of patients which decides it. Also, doctor, any post-COVID issues, if you can let us know what all the symptoms that people generally face, because they are not able to understand if it is a new issue that they are facing, or is it due to COVID only. Body ache, weakness is very common complaint with patients. They sometimes feel fluctuating blood pressure and blood sugar values. This is very common post-COVID complaint which are seen in most of our patients. Apart from it, there are various symptoms, hair fall, insomnia, and other things are also there, which is there. But the essence is be connected with your doctor and be with him at least for 3 months post-COVID. If you are non-diabetic and if you are diabetic, you need to be with your doctor for your life. Thank you so much, doctor. We do not have any more questions in the audience section. Thank you, Manisha ji. So, thank you so much, doctor, for taking out this time today for this first session. We hope that we'll have more questions in the second session. Sure. We will again meet on Thursday, 6 p.m. with the next doctor. Thank you. Doctor. Thank you so much, everyone who have joined us for this session today. If you have more questions, you can, keep listing them, and we'll surely discuss them in the next session. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, everyone. Thank you so much, doctor, for taking out the time today. Thank you. Thank you. Have a good day.